In a moment, we will be joined by our esteemed guests who have made significant contribution to our armed forces. Please welcome, accompanied by Mr. Manoj Kumar and Mr. Surendra. Today we are honored to have among us someone who belongs to our network that is the backbone of our nation. Yes, our true heroes, the Army. Indian Army is one of the strongest and largest force all over the world. Their protection and discipline are made them different from others. जो ये सब ब्रांड करते हैं ना, इतनी भी महंगी टी शर्ट पहन लो, इतने भी बड़े ब्रांड के शूज पहन लो, पर जो शान इंडियन आर्मी की ड्रेस में है ना, वो किसी भी में नहीं है. Today, we have such a personality, Mr. Surendra Yadav. I would like to call him on stage to tell about that our school is going to start defense academies like SSB, NDA, etc. I would like to call Mr. Surendra sir for briefing us about the proposal. A big round of applause. Jai Hind, all of you. Firstly, respected Brigadier Baba Sahab, ex-army heads, Sri Vikramji, owner of the school, principal man, Sri Krishna Yadav, and all my dear students and all respected staff. हमारा प्रोपोजल क्या है? प्रथम स्कूल है, इसके अंदर डिफेंस गार्ड, प्रथम डिफेंस गार्ड. अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे ये बैट है, रेवाड़ी, इंद्रगढ़, नारनौल, इसमें काफी डिफेंस ऑफिसर हमारे पास काफी है. बट दिक्कत क्या है, बच्चों को कुछ ना कुछ करने के लिए कहीं जाना पड़ता है. बच्चों को चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है, वहाँ बच्चों का विजिट करना पड़ता है. उसका टाइम खराब होता है. They have to stay in hostel there. यानी कि this is not problem there. तो that's why मैंने रिक्वेस्ट किया था मेरे हिसाब से कि साहब जैसे I am getting retired from army and this is my plan in Rewari itself. Because ये एक ऐसा सपना है जो कि पेरेंट्स को होना चाहिए. हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस हमारे लिए गर्व है, हमारा प्राउड है. इस प्रकार हर एक पार्टी के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है. तो हमारी जो प्रथम डिफेंस अकादमी हम प्लान कर रहे हैं, ये हम एनडीए, सीडीएस, एफके एज वेल एज ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज दैट इज स्टडीज इन लो. इसके बाद में एक मैं इंजेक्शन लक्ष्य दूंगा बच्चों को, दैट इज फॉर द 11th 12th कि कैसे क्या तरीके हैं, क्या एंट्रीज हमारी. बट अभी मोटा मोटा बताऊंगा मैं कि हमारी अकेडमी का मकसद है कि हमारे डिफेंस के अंदर ऑफिसर के लिए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, जो हमारे बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना एज वेल एज उनकी प्रिपरेशन करवाना. सो दैट हमारा टाइम निकाल के रेवाड़ी के अंदर ही सेफ फैसिलिटी हम इधर रेवाड़ी में क्रिएट करें. और आई वुड लाइक टू थैंकफुल टू प्रिंसिपल मैम उत्तम सर एंड मानसी जी कि उन्होंने हमको इधर स्पेस दिया कुछ करने के लिए. और हम अपनी फुल मेहनत से इसको अच्छा करना चाहते हैं ताकि हमारा प्रथम इंटरनेशनल स्कूल एज वेल एज हमारे डिफेंस आर्मी जो ये प्रथम की है कि अच्छी चले. तो इसके साथ ही आई वुड लाइक टू मिस्टर प्रवीण. नेक्स्ट यू वुड कवर two things and greater achievement about Brigadier Bhanga Sahab because he is from Army Defense. I am also from ex-Army Defense. Manoj Sahab भी Army Defense से हैं, ठीक है. And I also would like to say something in between project NDA और 49 नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर मिस्टर अंकुश नेहरा अभी रिसेंटली पासिंग आउट हुए हैं एनडीए से. तो साथ के बाद क्लास में अंकुश भी बताएंगे आपको रिगार्डिंग डिफेंस
its background and the status of officers in defense forces. Thank you very much. Thank you. Now, let's welcome our esteemed guests. I would like to call dance girls. What a brilliant performance. A big round of applause again. As we know that Indian Army is one of the strongest and largest force all over the world. Their protection and discipline are make them different from others. Today we have such a personality, Brigadier Akhilesh Khatwar. He joined NDA in July 1979. He served for over 37 years. He has excelled in both academic and sports. He has done BTech, MBA Finance, MSc Defense Studies, MSc Weapons Systems. Besides, he has done short course on Missile Technology Communication, Automobile Engineering and Interim Officers course. He has also done Commando course, then Commando of AP Unit, Head of Army in Northern Field. After that, Deputy President, the President of Services Selection Board. He is prolific writer and he has been chapters contributor of 3 books.
Recently, he represents Delhi State in National Master Swimming Championship and got 1 gold and 2 medals silver. Sir, it's absolute privilege to have you. Please share something with us. We eager to listen your insights. Please come on the stage. A big round of applause. Mr. Uttam, Madam Krishna, Mr. Himanshu, from our courses, Swetha, and of course, who has come after passing on from India. First of all, I am thankful for such a wonderful welcome to me. It's my proud privilege to be here, present amongst you, and coming to the Pratham school. It's a very great honor, I feel, after seeing the achievers gallery out here, which are displayed. I myself, being a great sports person, having represented at the national level in swimming, in rowing, sailing, and even done full marathon. So after going through these names who have won medals at national level, a big congratulations to each one of you. And it goes to the credit of the management and the staff for promoting this extracurricular activities, sports and games. Now, you have heard my brief introduction, but what I want to tell each one of you, that as you continue your studies, your scoring marks should not be the first and only thing. What is most important is that all of you should concentrate on developing your personality. When I talk of personality, it means that whatever you are studying, number one, it should not be with the aim of scoring high marks. It should be with the aim of understanding what you are studying. When it comes to languages, Hindi and English, Sanskrit, you understand the mechanics of how to go about solving the various problems. History, geography, civics is a very systematic way of studying. It is of just understanding it and remembering the things. And when it comes to the science subjects, physics, chemistry, maths, there you must know the hows and whys. Why things happen? Why do you do a thing in a particular way? And then the assimilation and the things which you study, you will remember for a long time to come. Most of the students, what happens after giving you exams, you tend to forget. But if you have studied after understanding of the hows and whys things happen, then you will remember for life. I want to give you an example, self-example rather. So at that point in time, in 1978, after passing my 11th, that point in time, the 80 entry was after 11th. And after 11th, I gave my class 11th, rather when I was in class 11th, I gave my written exam. And I cleared it in the very first attempt. Why I could do it is,
though I was, not a upper time, like 80%, 90% understanding and remembering things, that was what I followed. And the very first attempt when I gave the NDA exam, very few cleared in the very first attempt. So I cleared the written, and since at that point in time, when I was in 10th and 11th, I was participating at the national level. So the SSB I could do again in the very first attempt and ended up with a all India rank of 36. It could be possible because when you focus on your personality development, then things become easier. So that is what I would like to convey to the teachers, to the staff, especially the ones who are taking classes in 9th, 10th, 11th and 12th. They should focus on what is the aim of the school to prepare children for very competitive exams. So therefore, their aim should be to go through the syllabus of what it is for these competitive exams and then correlate the type of questions which are coming for these competitive exams and include them post teaching a particular chapter, that what kind of questions can be expected in the competitive exam. You will find that not only the children, but the school will also earn its name and a position in the society. Now this proposal which has been put forward to you by Surendra is a very, very honorable one. We have seen that many academies exist, whether in Delhi, Gurgaon, Rewari, Mahendragarh, Nalnaul. So this is a very captive area where so many of you would love to join the defense forces, and especially as an officer. There are various entry systems, and the foremost and the most prestigious remains NDA, because right immediately after your 12th, if you get through to NDA, your future is secure. What want? That they want the children themselves, that they are settled for their future career, and then thereafter they can focus on what and how they perform at the academy. I have been at the SSB for a total of 5 years, 2 years as deputy president and 3 years as president. Both time I was in 19 SSB. Periods, I had interviewed close to another 3,600 plus candidates, live interviews. Post my retirement, I have been providing training on very as required basis, on freelance basis. I have not joined any academy per se, and more than 2,000 candidates have taken training from me. और बहुत जरूरी है कि ये जो मैंने जिसको ट्रेनिंग दी उनको बहुत सारे बच्चे जो है सिलेक्ट हो गए एंड दे वर एबल टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। बहुत सारे बच्चे जो है आज की तारीख में वो ऑफिसर्स बन चुके हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट इफ ये जो फैसिलिटी बनाने की बात हो रही है आपके स्कूल के अंदर ही, आपको इधर भागना नहीं पड़ेगा। आपके घर के अंदर जहाँ आप पढ़े हो वहीं पे ट्रेनिंग मिल जाएगी एसएसबी के लिए, और जो सहूलियत यहाँ पे बन जाएगी आप उसको आराम से अपने समय में उसका इस्तेमाल कर सकोगे, और जब टाइम की बचत होगी तो ऑब्वियसली उस टाइम को आप सही ढंग से इस्तेमाल करोगे। यकीनन है कि then you will get more time to prepare. So what I would like to congratulate the management
that since they have taken this step कि आगे आने वाले समय में प्रथम स्कूल के अंदर ही एसएसबी की ट्रेनिंग स्टार्ट जो होने होगी और उससे आप सबको भरपूर फायदा होगा और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कि 11th-12th के बाद इधर उधर जाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस में एंट्री लेंगे और इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का भी नाम रोशन करेंगे। अभी कृष्णा मैडम से मेरी बात हुई है, बाकी हिमांशु जी से और उत्तम जी से भी बात होगी कि आने वाले समय में अगर हो सके कि इस स्कूल को आजकल प्राइवेट सैनिक स्कूल भी बनना शुरू हो गए हैं कि क्या इस स्कूल को हम एक प्राइवेट सैनिक स्कूल ही बना लें। अगर वो हो जाता है तो आप लगा लो कि जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे सैनिक स्कूल कुंजपुरा वगैरह वगैरह, तो उसी प्रकार से ये एक प्रथम स्कूल भी एक सैनिक स्कूल के रूप में उभर सकता है। तो किस प्रकार से होगा ये कार्यक्रम वो मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ, उनको सुझाव देता हूँ, अगर पसंद वो आया तो इस और भी ये काम चल पड़ेगा तो और भी सहूलियत हो जाएगी सब बच्चों के लिए कि फुल जोश के साथ और पूरे फैसिलिटीज के साथ आप लोग इस मुकाम पर चल पड़ेंगे जो कि ज्वाइनिंग दी डिफेंस फोर्सेस। In last, I would just like to say that all the children, it was so nice talking to you and hearing me out so patiently, sitting quietly in a very disciplined manner. I really like it. To the staff and teachers for inculcating the spirit of discipline and also being so dedicated to achieve very good results. I have seen on the board where they have complete the the students who are the toppers, they have scored fantastic marks. Obviously, the kind of effort that you have put in is simply great. So congratulations to all the teachers and staff too. Thank you and Jai Hind. A big round of applause for sir. Now, we have another proud moment to share that our school students, which are talented students, Vanshika and Laksha, at national level, they got selected in international trial. And Nikhil, Kedar, Tanuj, Piyush, Rohit, Dipanshu, as Dhanvi, they got selected for National Rewari Championship in Haryana team. So now it's my request to their parents to please come up and share your happiness with your daughter's achievement. इससे पहले ये बच्चे यहाँ पर आए, I would like to say that at this age, I represent Delhi State in National Masters Swimming Championship और ये हर साल मैं कितने साल से जा रहा हूँ और इस साल अभी 21st, 22nd, 23rd नवंबर को ही समापन हुई थी हैदराबाद के अंदर and in that I took part in so many events where I got one silver medal and 2 fourths and 1 fifth. So ये जो स्पोर्ट्स का जज्बा है and which keeps yourself physically fit, ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए. It also goes to all the teachers too. Now I would like to invite Raman sir on stage.
our school principal ma'am and Mr. Uttam sir. Put your hands together. दीपक सर देखो क्या रहा है Now I would like to invite Raman for speech. Thank you, Chairman Sir, Director Ma'am, to invite me, and thank you, Media Sir. It's a privilege for us to have you here. आज आपने बच्चों एसएसबी के बारे में जाना और कैसे आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं, उसके लिए आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है आपके स्कूल में। और ये बहुत खुशी की बात है कि अब आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा अपनी डिफेंस सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो मेरा मानना है कि यहाँ से बच्चे डिफेंस सर्विसेज में सेलेक्ट होंगे और सर यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा लेके आए हैं, तो आपको उसे अवेल भी करना है और अपने फ्यूचर को बनाना है
डिफेंस सर्विसेज में इंडिया के लिए आपको सर्विस में जाने का मौका भी मिल सकता है। तो मैं बेसिकली आज आया हूँ आपके बीच एक और खुशखबरी लेकर कि हमारे स्कूल से 2 बच्चियां जो हैं वो नेशनल क्वालिफाई हो गई हैं शूटिंग स्पोर्ट्स में, और एक जो बच्ची है वो इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए भी क्वालिफाई कर रही है। और मैं इन दोनों बच्चियों को बधाई देना चाहूँगा कि इतने छोटे से वक्त में बहुत कम समय में इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। इनके पेरेंट्स को मैं बधाई देना चाहूँगा। और हमें यहाँ पे बेसिकली 6 बच्चे हमें स्कूल से मिले थे, और 6 में से 2 बच्चे इतने अच्छे परफॉर्म कर पाए और इतने कम समय में अचीवमेंट ला पाए, ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, अगर मैं बात करूं जिस आज जो मेन आपका प्रोग्राम है एसएसपी को लेकर, तो मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन जो बीटेक इंजीनियरिंग की थी अम्बाला यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने भी एसएसपी दिया था, बट मैं क्लियर नहीं कर पाया था। तो कुंजपुरा से ही सैनिक स्कूल से पास आउट, और वो सेलेक्ट हो गए थे, और वो अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो वैसा ही एक प्लेटफॉर्म आपको उस टाइम मुझे याद है कि एसएसपी की कोचिंग के लिए मैं नहीं आ पाया था। गुड़गांव में कोचिंग मिलती थी, बट मैं किसी रीजन से नहीं आ पाया था। वो उन्होंने अटेंड की थी यहाँ पे गुड़गांव में कोचिंग, और वो सेलेक्ट हो गई। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपके स्कूल में मिलने जा रहा है, ये रेवाड़ी शहर के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप एनडीए एग्जाम देंगे और उसके लिए प्रिपरेशन, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन प्लस एसएसबी की प्रिपरेशन, वो आपको अपने घर में मिलने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रथम स्कूल इस चीज को आगे लेके चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सोच है उनकी, काफी फ्यूचरिस्टिक सोच है, जिससे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और देखा जाए तो मैं शूटिंग स्पोर्ट्स में हूँ अभी फिलहाल, तो मैंने देखा है आर्मी के बच्चे जो आर्मी टीम खेलती है शूटिंग में, वो हर साल हर नेशनल्स में, अभी जैसे लाइक 8 इवेंट्स हैं शूटिंग में, 10 मीटर, 25, 50, फिर उसके अंदर शॉर्टिंग वगैरह। तो एवरी ईयर मैं देखता हूँ कि आर्मी की जो टीम है वो शूटिंग स्पोर्ट्स में नेशनल में हर साल किसी न किसी इवेंट में टॉप पे रहती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वहाँ पे आर्मी सेंटर्स में खाली बच्चे को पढ़ाई या खेल, इन चीज़ों पे एक चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता। वहाँ बच्चे का हर चीज़ पे फोकस कराया जाता है, चाहे वो उसके योगा हो, चाहे उसका गेम हो, चाहे उसकी एजुकेशन हो, चाहे उसकी फिजिक्स साइंस हो, हर चीज़ पे फोकस किया जाता है। तो उसका कहते हैं ना कि आज के दिन में आपको सर्वांगीण विकास करना है अपना, ठीक है? तो अपने शरीर का सर्वांगीण हर तरह से अपने आप को तैयार करना है, तो वो वहाँ पे सिखाया जाता है। और स्पोर्ट्स साइंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। बट मैं इन बच्चियों को बधाई देना चाहूँगा कि इनको थोड़ा सा जो समय मिला, इनको 1 या 2 घंटे जो इनको प्रैक्टिस के मिले, मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा इनको मिला, और उसमें ही इन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की। तो मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ, और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. A big round of applause again. Now, I would like to call new joint NDA soldier to share about their efforts. Put your hands together.
the directing staff of the school, the staff of the newly coming defense project in Pratham school, and the students sitting in this august gathering. A very good morning to all of you. Myself, Ankush Nehra, I have recently passed out from National Defense Academy, Kadakwasla, and I would soon be joining the Indian Military Academy in Dehradun. And starting my journey, I was studying in a similar school like the Pratham school in my town Bawal, and this gathering reminds me of those days when I used to sit and look upon the defense personnel or the military men who used to come to our school to deliver similar kind of motivational speech and to motivate us to join the defense forces. From there, I would like to share my experience, what I have gone through in my journey for reaching to National Defense Academy. Thereafter, by the guidance of my parents, they took me for a coaching institute to prepare for the science schools. And there, while I was in my fifth class, I studied for All India Science School entrance exams. I've seen these boards which are displayed in this gallery, that there are a few students who have joined science schools from this school as well. And the rest of you should take a motivating factor from them and should definitely try for this. Thereafter, I was able to clear my science school entrance exam. And we had more in the science school. It was conducted by the principal, and thereafter a medical examination, and that whole process at an age of around 10 to 11 years. I went through that process, and then I joined science school in 2015. Training at science school for 7 years and getting a lot of valuable lessons which not only pertains to studies, it includes the games, sports, personality development, your physical activities, running, your physical trainings. All these things are very well planned, and in those schools overall the character and the personality is developed. And it is a very good news, and I am very glad to see that the project launched by Indian government in 2022 of 100 more science schools, and it's a very good thing that sir has planned to make. They have given a project to convert this Pratham school into a science school. It would be a huge privilege for the students studying here that they will be getting these facilities at their home itself. I had to go travel 500 kilometers to avail all these facilities. Thereafter, completing my 11th, 12th from science school, during my 11th class it was the COVID times. So while I was at home, the guidance from my elder brother, who himself is a lieutenant in the 14th Cyclone Infantry, and he has passed out from NDA around 1.5 years ago. He guided me with pertaining to my studies and the personality development. So I would like to advise all the students and the staff that only studies are not the things which are seen in military or the defense forces. We need to get a personality out of the student, and only studies and only games won't suffice. We need to balance and take all these things together. Thereafter, I would like to give you an insight about my preparing phase. While I was preparing for my written exam, UPSC written exam, and thereafter the assessment review. While I was preparing for my UPSC written exams, it consists of two exams. One is the mathematics, and the other is the general ability test. General ability test includes your English, your science subjects, your social science subjects, and the general knowledge. And the mathematics is a subject in itself. So you guys can plan out, especially the
11, 12 guys, you need to get serious. Once you are in your class 11, you need to focus for next 2 years towards your aim. You need to decide what you have to do, plan accordingly, and then you should, under the guidance of the staff, your teachers, your parents, and their mentorship, you should be focused and start working towards that. Thereafter, once I was able to clear my NDA written exam, I was told about the SSB interview. Then, as the things already mentioned by sir, that we have to travel to far distant places for availing the SSB interview programs. There are 15 days capsules, 30 days capsules, which are provided by different coachings around the country. I went to Gurgaon, I went to Chandigarh, but these places are far distant from here, and we need to face a lot of difficulties. And once you are able to get these facilities at a place which is very near to you, I would say it's a huge privilege, and we should all take the benefit out of it. Thereafter, in the first attempt, I was not able to clear my SSB. I focused on, I was not able to clear my SSB. First SSB I gave it in the AFSB Guwahati. There I was conference out. But that is not end of it. For a few days I felt like life is over. And I'm not worth going into any military institute. But my parents, friends, guardians, they all motivated me. And when I re-attempted for my NDA written exam, I was able to clear it. And then I gave my second SSB at 1 AFSB Dehradun. And there I was a bit hesitant that I have already been rejected by an SSB board. Will I be able to make it this time? I was a little hesitant. But your preparation, your continuous hard work, you working on yourself, developing the personality, your character, and all these things will take you ahead. And in 2022, I was able to clear my SSB and thereafter medical exams, and I joined National Defense Academy in January 2023. And 3 years of training over there, it has changed me a lot. Trust me, one thing I would like to say about forces is that it is said in forces that forces are a way of life. And there is not an iota of doubt that I have today standing here that forces is a way of life. Today morning itself, no one, I guess, would like to get up while he is on a vacation, get up at 5 o'clock, go for a run. But this thing, training at NDA has changed me. Today morning I got up, I went for a 12-kilometer run, came back, got ready, and I am standing here now. All these things will get into you, and they will get into your body, and you will not even realize it. So, in the end, I would like to say that forces and defense forces, especially in places like Haryana and the northern parts of the country, there are a lot of people joining forces, and it's not that tough. I would advise all of you to just focus on the overall development of your personality and character. You should be a man of words. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, sir. We will follow your advice. A big round of applause for sir. Now, I'm glad to invite our school principal, ma'am, to express our gratitude. Put your hands together.
respected brigadier sir, director sir, सुंदर सर जी, मनोज सर, सर जी, सभी स्टाफ मेंबर, प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को अब तक बताया है, उसको लेके कितनी खुशी हो रही है। और मेरी जो हर बात को रोजाना आपको बताती हूँ, बेटा एक सांस भी जो लिया जाता है वो आपकी भलाई के लिए सोचा जाता है, ऐसा बताती हूँ कई बार। तो वो भी आज की खुशखबरी है, जैसा कि सबने बताया है, समय लगाया है और ये आपके भविष्य के लिए करने जा रहे हैं। ये सभी चीजें आपके फायदे के लिए कि यहीं की यहीं सब सुविधाएं दी जाए बच्चों को, जो आज तक कोई स्कूल नहीं दे पा रहा वो सुविधाएं अपना प्रथम स्कूल देने जा रहा है। ये सब इन सब में इंटरेस्टेड अपने सबका सहयोग है, स्टाफ का भी है और अपने सबसे ज्यादा सहयोग है हिमांशु सर का, है ना। उनकी नई सोच के साथ और नई जो उनमें जोश है उसको बढ़ावा देने के लिए आप सब बच्चों का सहयोग जरूरी है। अब कई बच्चे देखो इधर उधर नहीं देखना चाहिए बेटा, कभी भी इधर उधर देखना नहीं चाहिए। अगर हमने इस कीमती समय को यूं वेस्ट कर दिया, यूं करके या शरारत करके, तो सक्सेस नहीं हो पाओगे कभी भी। अगर आपको सक्सेस होना है तो हर कदम पे हमेशा, चाहे क्लास हो चाहे कहीं भी बैठे हैं, हमें बिल्कुल एक्टिव होकर हर चीज सुननी पड़ेगी। हर चीज ध्यान से सुनेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। अब देखो जैसे बच्चियों ने सबने बताया, रमन सर जी ने बताया अभी कि हमारी बहुत कम समय में और बहुत कम समय की ट्रेनिंग में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है बच्चियों ने, लक्ष्य और दीक्षा की है ना। तो आप भी कर सकते हो ऐसे, हर पढ़ाई में या गेम में या कल्चरल एक्टिविटी में, किसी भी चीज में आप भी आगे आ सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा कामयाब होगा, बट कब लगन से काम करोगे तब। ये अपने स्कूल को बता रहा है सर कि जो भी हमने स्टेप उठाया है हम सक्सेस हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहले 96 में सबसे पहले मैरिट शब्द कोई नहीं जानता था। आज तो बहुत बड़े बड़े स्कूल आ गए, सभी इलाके में मैरिट शब्द नहीं जानते थे कोई भी, जबकि हमारे स्कूल ने मैरिट दिलाई बच्चों को, स्कॉलरशिप दिलाया, स्टेट रैंक दिलाई, ये हमेशा का रिकॉर्ड रहा है। अब बच्चे देखो हमेशा एक दो निकलते हैं और ज्यादा भी आ सकते हैं अगर आप सबका सहयोग रहे तो। और सहयोग तब रहेगा जब आप कहना मानोगे, अपने टीचर का कहना मानोगे तब सहयोग रहेगा। अब आजकल थोड़ा सा भी मीडिया ने धमका दिया या किसी भी स्टाफ ने धमका दिया, बच्चों को ये ईगो छोड़नी पड़ेगी कि मुझे बिना बात धमका दिया, मुझे बिना बात टोक दिया। ये अगर छोड़ दिया ना बहुत जल्दी कामयाब हो गए। आप देख रहे हैं ये सब छोड़ने पड़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं, मुझे बिना बात टोक दिया सर आपने मुझे बस बिना बात टोक दिया। कभी भी कोई टीचर बिना बात नहीं टोकता, कोई भी टीचर बिना बात नहीं टोकेगा। तो आपके फायदे के लिए की जा रही है सारी चीजें। सर ने जो कीमती समय निकाला है हमारे लिए और जो आगे सर की डायरेक्शन में, सर की गाइडलाइन में सुरेंद्र सर जी, मनोज सर जी ये संभालेंगे, तो ये सभी को आप अपने घर खुशखबरी देनी है। आस पड़ोस में जो और आपके साथी हैं उनको भी बताना है और ये जो सर जैसे भी गाइडलाइन करें उनका फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आप कामयाब हो सके। दूसरा ये इसके साथ साथ हमने गेमों में सर, गेम कोई भी गेम लो बहुत कम समय में हर कदम पे बच्चों ने उपलब्धि हासिल की है। जैसे कि हमारे जी ने किया, अभी दीक्षा ने किया, इससे बीच में ये जो भी गेम आए हैं इनमें ये दो बच्चे केदार वगैरह जो भी थे ये टीम ने सभी ने, और जो आप ये देख रहे हो सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, अपना ये अब ये भगवान चाहिए इस साल देखते हैं एक दो बच्चे नीट वगैरह में निकलने चाहिए। तो जो भी कामयाब हुआ है और हो रहे हैं और जो काम शुरू किया है उसमें कामयाबी मिली है, तो मैं
दावे के साथ कह रही हूँ सर, आपको भी पूरी भगवान कामयाबी देगा। लगन से, मेहनत से आप बच्चों का सहयोग करें और बच्चों से उम्मीद है कि ये ध्यान देकर लगन से सहयोग दें, सर का साथ दें, जैसा बताया जाए उसको फॉलो करें। धन्यवाद सर। सॉरी सर, बोलने के नाम में थोड़ा डिस्प्यूट। वंशिका बेटी ने किया है, वंशिका वो शिक्षा की जगह सोचिए लक्ष्य है वंशिका। सॉरी सर। Thank you all for inspiring us. Absolutely, we will follow your advice. We are going to see new things in our school which will help us in study as well as in our future. Again, thank you so much all of you. A big round of applause. उधर आ जाओ सर, भूख लग रही है सर को। अब मैं हमारे स्कूल के चैंपियंस वंशिका और लक्ष्य के पेरेंट्स को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों की कुछ उपलब्धियों पर अपने कुछ विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। Keep it upon. हेलो, मैं स्कूल स्टाफ का और भ्रमण करता धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मतलब बच्चों को एक मंच प्रोवाइड किया जिससे ये अपना बेस्ट दे पाए और सिलेक्ट हो पाए नेशनल के लिए। और ये फर्स्ट टाइम है हमारे परिवार में, मतलब पहली बार इस बच्चे ने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है। और ये बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए जो आज हम यहाँ पे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेहनत करें और आप भी नेशनल के लिए क्वालिफाई करें। धन्यवाद। Now I request you, our guests, please move on to the reception side. Keep it upon. क्लास में भेज